subscribe my channel and hit the bell icon. So today's menu is spring roll. Spring roll जो सबको बहुत पसंद होते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है और इसकी रेसिपी इजी और बहुत ही क्विक है. So let's begin the recipe. In wok, add 3 to 4 tablespoon oil, 1 cup boiled chicken shredded, 1 cup carrot julienne, 1 cup capsicum julienne, 1 cup cabbage julienne, and half cup green onion. Give it a good mix. Add salt to taste. Two tablespoons of black pepper crushed. Mix it well. And 2 tablespoons of soya sauce. Stir fry for 2 to 3 minutes. इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है. आपकी वेजिटेबल थोड़ी कच्ची पक्की होनी चाहिए क्योंकि क्रंची क्रंची अच्छी लगती है. And then set aside. In all-purpose flour, add water and mix well to form a smooth paste. Take roll sheets, add filling, fold it from edge and roll it. Then fold from both sides. Roll again. Now apply all-purpose flour paste. And fold it. In wok, heat oil and fry until golden brown. Ready to serve. Yum!